So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to another great day of our beauty streak of day 200. So yes, we have finally reached our first milestone as you can say. तो आज डे 200 कंप्लीट हो जाएगा यार। और कल का क्वेश्चन जो कि हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन था एंड इट वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन जो डीपी लगाने के बाद भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर अपने बायनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें वो डीपी लगाने के बाद भी ऑप्टिमाइजेशन होती है मैट्रिक्स के थ्रू जो कि लॉगिन में हो जाता है, राइट। तो वो क्वेश्चन मैं कल के लिए स्किप किया था यार, मैं अवेलेबल नहीं था, जैसे आज भी नहीं हूँ मैं, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप विद माय शेड्यूल। मैं कल का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तब तक देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन में एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है। Let us see what the today's question say and how many approaches are there to solve it. So we have been given an array of an integer and an integer k. Our task is to find the total number of cuts, and cuts is nothing but it divides an array into two parts, equal or unequal length, right? और ऐसे और जब हमने डिवाइड कर दिया, then the sum of the largest element in the left part and the smallest element in the right part should be greater than equals to k, right? तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स से तो हमारे पास टेस्ट केसेस 1 2 3 थे, राइट। पेंट पे चलते हैं। 1 2 3 था हमारे पास, तो लेट्स से हमने कट कहाँ लगाया, लेट्स से हमने कट यहाँ लगाया, राइट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 और यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा 3। तो 2 + 3 करोगे तो आता है 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो वापस से इसका आउटपुट देखते हैं। तो 1 1 2 और 3 पे ये था, 1 2 और 3 पे तो लार्जेस्ट हो गया 2 इन द लेफ्ट साइड और 3 हो गया, इसका प्लस करो दैट इज 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सैटिस्फाई द कंडीशन, दैट इज वी विल डू आंसर प्लस प्लस। सिमिलरली हम सारे कट्स को देखेंगे, राइट। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो जाएगी हमारे पास कि लेट अस डिवाइड एन एरे फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन, राइट। तो लेट्स से हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम एक फॉर लूप रन करें फॉर लेट्स से i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन n, राइट। और हम यहाँ पर एक कट लगाए, राइट। फॉर i इक्वल्स टू 0 हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू जब हमारा पॉइंटर करंट ये करंट आई होगा, राइट। तो हम एक लेफ्ट एरे बना लें जिसमें हम स्टोर कर लें 0 से लेके i तक, राइट। और हम एक उसी समय एक राइट एरे बना लें जिसमें हम स्टोर कर लें i से लेके n-1 तक, राइट। तो एक तो हमारा पहले से फॉर लूप चलेगा, ये बनाने के लिए हमें वर्स्ट केस एक बार और n लग जाएगा और एक बार और n लग जाएगा, राइट। जब ये हो जाए तो वी विल जस्ट इटरेट फॉर इन लेफ्ट और वी विल व्हेन वी इटरेट इन लेफ्ट देन वी विल ट्रैक द मैक्स एंड व्हेन वी विल इटरेट इन द राइट वी विल ट्रैक द min एंड एट लास्ट वी विल चेक कि अगर मैक्स प्लस min जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है देन आंसर प्लस प्लस। सिमिलरली वी विल डू दिस फॉर ईच एंड एवरी ith इंडेक्स। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, द दिस फॉर इस i में इटरेट करने के हमारे पास एक n चला गया, देन पार्टीशनिंग द एरे इनटू टू पार्ट्स दैट इज लेफ्ट एंड राइट, तो हमारे पास एक n और चला जाएगा, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो ये तो पैरेलल वर्क होगा तो इट वुड बी n + n 2n, राइट। वर्स्ट केस हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से, राइट। वर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि अगर हमने पहले एरे में सिर्फ एक एलिमेंट और बाकी में पूरे n-1 हो तो ये n ही होगा, राइट, ये n ही होगा। तो वो तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n × n दैट इज n²। और कंस्ट्रेंट हमारा 10⁻6 दे रखा है, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 10⁻12 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 10⁻8। तो हमारा कोड अगर अप्रोच सही भी है देन वी विल गेट द TLE, राइट। आई एम नॉट कोडिंग दिस अप्रोच, यू कैन वेरी वेल डू दिस कोड इफ यू वांट, राइट। let us move to the optimized approach now. Please pause this video and try to think the optimized approach and how we think for the optimized approach, that what were the repeating steps that you were doing in the brute force, right. Try to eliminate those steps or optimize those steps, right. Repeating steps that we are doing is that we are every time we are partitioning the array. So try to think of any such approach where we do not need to partition the array, right. For each and every index we already have the answer for largest in the left and the minimum, the smallest in the right. Try to do that thing and come back to maybe in 5 to 6 minutes. ठीक है, सो लेट अस रिज्यूम। तो ये जो अप्रोच मैं बताने वाला हूँ, ये एक लास्ट में भी एक क्वेश्चन आया था जो हमने इसका इस्तेमाल किया था, आई डोंट नो 2-3 डेज बैक अगो मे बी। तो हम क्या करेंगे कि वी विल मेक अ लेफ्ट एरे and we will make a right array, right. In left array what we will do is that we will start from the first index and we will store the maximum, right. हम maximum को track करेंगे, जैसे 1 है, right, तो हम इसमें check करेंगे कि this 2 if it is more greater than my previous index then I will again update it as well, right. Similarly the next element is 3, if it is greater than my i-1 left of i-1 then again update it and similarly it will go on, right. तो ये क्या इंश्योर करेगा, इफ आई एम एट दिस पॉइंट देन द लेफ्ट एरे विल इंश्योर कि i इक्वल्स टू लेट्स से 0 1 2 3 4, i इक्वल्स टू फॉर 2 index left of 2 is indicating that this is the largest element from 0 to 2, right. Similarly if I talk about the third index then this element will represent that this 4 is the largest element from 0 to third index, right. तो हमें ये हो गया अचीव लेफ्ट से, right. Similarly what we have to find the smallest, right.
और हम पार्टीशन कर रहे हैं एक लेफ्ट और राइट में, तो हमें राइट में कहाँ से मूव करना चाहिए? शुड वी मूव इन फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स और शुड फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स? तो आई विल से दैट लेट्स अस मूव फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, राइट? हम यहाँ पे अब स्मॉलेस्ट मेंटेन करेंगे, तो ये 5 था, इसको एज इट इज कॉपी कर दो. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 4. इज इट लेस देन माय प्रीवियस एलिमेंट in the right array? Yes, so update it again as the smallest element. Again 3 will be rotated 2 and 1, right? So ठीक है, so for I equals to 2, what I'm saying is, let's say for I equals to 2, I have to first of all check I plus 1. You have to go I plus 1 and you will get 3, right? So if I am doing the partition as, let's say this, at this point, let me use a different color. I'm this point, right? So that means I'm partitioning the array from index 0 to 2 and 3 to 4, right? And if I just take left of 2, then that would be my largest element from 0 to 2, right? That is 4. And if I take right of the index plus 1, that is right of 3, then will give you as 4. So this is ensuring that this is the smallest element in the right part of division, right? तो हमें यही करना है यार. We will pre-process this thing. This will take O of n and O of n times, so O of 2n, right? And then we will run again a for loop for I equals to 0 to n, and then we will just check if left of I plus right of I plus 1, if it is greater than equals to k, which is asked in the question, then I will do answer plus plus. So we'll need again one for loop, so O of 3n. The overall time complexity will be, again, if you remove the constant O of n, and the space complexity would be O of n, right? And since the constraint is 10 power 6, which would be less than 10 power 8, so that's how the code will get submitted. Please pause this video and try to code this approach yourself, and we'll resume again back in, let's say, 2 to 3 minutes. Okay, so that's the code here. We are making a right array and the left array, and what we are doing, that the left of 0 is equals to a of 0, and the last element would be the last element of our right array. And that's how we are tracking. We are updating the maximum elements in the left array from the left, and in the right array from the right, that is the smallest one, right? I hope you're getting this point. We have showed this in the pseudocode, right? And then we have this third for loop that is again going from 0 to n minus 1, and we are checking that if left of I plus right of I plus 1 is greater than or equals to k, then we have to do answer plus plus. You know why that right of I plus 1 y is working? Because if you check for this particular index, let's say 2, then the right division part is from index 3 to 4, but you will get the smallest part for this index at I plus 1 if you are checking for, let's say, I equals to 2, right? I hope we are clear at this point. Let us resume. Let us compile and run, and we will see that if our code works for the expected output or not. And if yes, then we'll hit the submit button. And I hope you were able to do this question as well, because I can see a massive number of submission on this question, and accuracy is 54.81, and it's still 3 o'clock. Great. Let us hit the submit button. So yes, all the test cases have been passed successfully, and yes, we are good to go. So till then, we will meet again in the next beauty streak of day 201. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care. Also, that's my DSA repository. You can start and fork to get help with the source code. And if you have a new approach, please raise a PR on the DSA public branch, right? And yes, and I have not seen the pull requested. I guess there are some 2 requests raised, so I will see to it and I'll accept the request. In the meantime, till then, keep learning, keep growing, and bye bye.